Last day we started chapter 10 of history textbook 18th century political formations. Today our next topic is emergence of new states. With the decline in the authority, and the authority was Mughal Empire. With the decline of Mughal Empire, the governors of large provinces, Subedars, and the great Zamindars consolidated their authority in different parts of the subcontinent. The Mughal Empire gradually fragmented into a number of independent regional states. तो मुग़ल एम्पायर यहाँ पे डिक्लाइन हुआ, तो उसके बाद नई स्टेट्स यहाँ पे जो बन रही हैं, तो 3 कैटेगरीज जो है उनकी बनाई यहाँ पर इन्होंने. ब्रॉडली स्पीकिंग द स्टेट्स ऑफ द 18th century कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ओवरलैपिंग ग्रुप्स. States that were old Mughal provinces like Awadh, Bengal and Hyderabad. Second is states that had enjoyed considerable independence under the Mughals as Watan Jagirs. And third was the last group included states under the control of Marathas, Sikh and other like the Jats. The old Mughal provinces. फर्स्ट कैटेगरी जो हमने अभी किया उसमें क्या थे? हैदराबाद, अवध एंड बंगाल. Out of the old Mughal provinces in the 18th century, 3 stand out very prominently. These were Awadh, Bengal and Hyderabad. All 3 states were founded by members of the high Mughal nobility who had been governors of large provinces. Shadat Khan, founder of Awadh, Murshid Quli Khan, Bengal and Asaf Jah, Hyderabad. All 3 had occupied high mansabdari position and enjoyed the trust and confidence of the emperors. तो ये तीनों ही जो किंग्स थे, मुर्शिद कुली अली खां, आसफ जा और शादत खान, तीनों ही इनके मुगल्स के काफ़ी क्लोज रहे हैं. अच्छी पावर इनको मिली हुई थी, मनसबदारी पोजीशंस इनको मिली हुई थी, बट ये अपने आप को इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया. आसफ जा एंड मुर्शिद कुली खान हेल्ड ए जात रैंक ऑफ 7,000 ईच. मुग़ल एम्पायर में हमने पढ़ा था ना, जात की रैंक दी जाती थी, तो वो रैंक कितनी है यहाँ पे? 7,000. एंड शादत खान जो है उसकी रैंक है 6,000. जिसके पास जितनी ज़्यादा जात होती थी उतनी ही बड़ी उसकी पोजीशन होती थी. पावरफुल होते थे वो लोग, सवार होते थे इनके पास, कैवलरी रैंक्स होते थे इनके पास. फर्स्ट इज हैदराबाद. निज़ामुल मुल्क आसफ शाह, द फाउंडर ऑफ हैदराबाद स्टेट, one of the most powerful members at the court of Mughal Emperor Farrukhsiyar. As the Mughal governor of the Deccan province during 1720 to 22, Asaf Jah had already gained control over its political and financial administration. अब आसफ जा वहाँ पे गवर्नर था, तो पॉलिटिकल और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है सारी उसके हैंड्स में है, पावर उसके पास है. टेकिंग सब्सिक्वेंट एडवांटेज ऑफ द टर्मोइल इन द डेक्कन एंड द कंपटीशन अमंग्स द कोर्ट नोबिलिटी, he gathered power in his hands and became the actual ruler of that region. The state of Hyderabad was constantly engaged in a struggle against the Marathas. To the west,
and with independent Telugu warrior chiefs, Nayaks of the plateau. The ambition of Nizam ul Mulk Asaf to control the rich textile producing areas of the Coromandel coast in the in the east, were checked by the British, who were becoming increasingly powerful in that region. अब टेक्सटाइल एरियाज जो थे वो कवर करना चाहता है, बट वहाँ पर उसको काफ़ी ज़्यादा अपोज मिल रहा है. Here is a description of Nizam's army. The Nizam has a sawari of 400 elephants, several thousand of horsemen near his person who receive upwards 100 rupees nominal pay and extremely well mounted at rich comparison. Second, old Mughal provinces was Awadh. Burhan Mulk Shadat Khan was appointed Subedar of Awadh in 1722. He founded a state which was one of the most important to merge out of the breakup of the Mughal Empire. Awadh. Awadh was a prosperous region controlling the rich alluvial Ganga plain and main trade route between North India and Bengal. जो मेन रूट था यहाँ पे नॉर्थ इंडिया और बंगाल में. बरहान मुल्क ऑल्सो हैड द कंबाइंड ऑफिसेज ऑफ सूबेदारी, दीवानी एंड फौजदारी. तो सारी अथॉरिटीज़ इसके पास हैं. सूबेदारी इसको मिली हुई, दीवानी वहाँ किसके पास है, फौजदारी इसके पास है. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द पॉलिटिकल, फाइनेंशियल and military affairs of the provinces of Awadh, because he have all the combined offices of Subedari, Diwani and Faujdari. That's why all the power, almost all of the power was in hand of Shadat Khan. He tried to decrease Mughal influence in the Awadh region by reducing the number of office holders appointed by the Mughals. He also reduced the size of Jagirs and appointed his own loyal servants to vacant positions. तो इसने अपने लोग वहाँ पे सेट करने शुरू कर दिए. मुग़ल अथॉरिटीज़ के जो लोग थे उनको वहाँ से हटा दिया गया. The accounts of Jagirdars were checked to prevent cheating, and the revenues of all districts were reassessed by officials appointed by the Nawab's court. अब जो रेवेन्यू वहाँ पे कलेक्ट किया जा रहा था, उस रेवेन्यू को दोबारा से चेक किया गया कि कहीं रेवेन्यू जो है गलत तो नहीं ले रही. He seized a number of Rajput zamindars and the agriculturally fertile lands of the Afghan of Rohilkhand. तो राजपूत ज़मींदारी जो थी वो काफ़ी हद तक किसने सीज की. एग्रीकल्चर लैंड जो थी, फर्टाइल लैंड जो थी, वो सारी रोहिलखंड की अपने एरियाज में कवर कर ली इसने. द स्टेट डिपेंड ऑन लोकल बैंकर्स एंड महाजन्स फॉर लोन्स. इट सोल्ड द राइट टू कलेक्ट टैक्स टू द हाईएस्ट बिडर्स. पहले टैक्स कलेक्ट किया जाता था, अब टैक्स कलेक्ट करने के लिए क्या किया इन्होंने, एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बिड रख दी. जो ज़्यादा बोली लगाएगा वो टैक्स कलेक्ट करेगा. दीज रेवेन्यू फार्मर्स एग्रीड टू पे द स्टेट ए फिक्स सम ऑफ मनी इन टर्न. फिक्स सम यहाँ पे जमा करवाओ एंड बदले में क्या होगा, इन टर्न क्या होगा, the revenue farmers were given considerable freedom in the assessment and collection of taxes. These developments allowed new social groups like moneylenders and bankers
to influence the management of the state's revenue system. And the third state was Bengal. In Bengal, who was there? Murshid Quli Khan. Bengal gradually broke away from Mughal control under Murshid Quli Khan, who was appointed as the Nayab, deputy to the governor of the province. Although never a formal Subedar, Murshid Quli Khan very quickly seized all the power that went with that office. सारी पावर्स इसके हाथों में आ चुकी है. In an effort to reduce Mughal influence in Bengal, he transferred all Mughal Jagirdars to Odisha. In an effort to reduce Mughal influence को कम करने के लिए इसने क्या किया? जितने भी जागीरदार थे उनको कहाँ शिफ्ट कर दिया अब इसने? उड़ीसा. And ordered a major reassessment of the revenues of Bengal. दोबारा से रीअसेस करवाया रेवेन्यू को. Revenue was collected in cash with great strictness from all zamindars. As a result, many zamindars had to borrow money from bankers and money lenders. तो पैसा उनको लेना पड़ता था अब सारा इंटरेस्ट पे मनी लैंडर्स के थ्रू. The formation of a regional state in 18th century Bengal therefore led to considerable change amongst the zamindars. The close connection between the state and the bankers, तो एक क्लोज कनेक्शन यहाँ पे चल रहा था स्टेट और बैंकर्स के बीच में. During the reign of Alivardi Khan, banking house of Jagat Seth became extremely prosperous. If we take a bird's eye view, we can detect three common features amongst these states. First, many of the larger states were established by erstwhile Mughal nobles. They were highly suspicious of some of the administrative systems that they had inherited, in particular the Jagirdari system. Second, their method of tax collection differed. And the third common feature, regional states, was their emerging relationship with rich bankers and merchants. These people lent money to revenue farmers, received land as security, and collected taxes from these lands through their own agents. Throughout India, the richest merchants and bankers were gaining a stake in the new political order.